So hey everyone, welcome back after a long time. So today, I was just trying to solve some contest. So I've made editorial, like this is the editorial for Codeforces Round 156. We'll be solving problem A, B, and C. So yeah. So starting with problem A, the problem simply says that the problem is simple. You are given a number n. You have to represent it in with the sum, like you have to represent n as a sum of three distinct positive integers x, y, and z, and none of these numbers should be divisible by 3. So just give a triplet to monocarb. Like what are those numbers? So you don't have to use much of logic here. For example, you can always use 1 to x wala approach. So what is this approach? Like you can represent, or like suppose because you want distinct numbers, like 1 2 3 is like these are the three smallest distinct numbers, like positive integers. So your number first of all has to be greater than 6, because 1 to 3 is not actually acceptable because 3 is actually divisible by 3. So you'll have to go greater than 6, and after you went greater than 6 there are some more conditions. For example, so let's consider some numbers which are greater than 6. So if I go for 7, let's just say 1 to 4, this is acceptable. 1 to 5, like this is 7, this is 8. 1 to 5 is acceptable. 1 to 6, this is actually not acceptable because first of all this is the sum for 9, and 6 can be written as like 6 is actually divisible by 3. But if you clearly see, or if you write some more random numbers, you can never represent 9 in the form of three numbers. That would never work. So you can just simply print a no for 9, and let's just continue. 1 to 7 is fine because 1 and 2 both are not divisible by 3, and so let's just focus on the numbers in this third column. So 1 to 8 is also fine. 1 to 9 will again give you some trouble, right? So let's focus on 1 to 9. So what 1 to 9 does is, like this is actually the sum for 12, right? So 1 to 9 is giving you the 12, but here you can play around with some numbers. So just because 9 is giving you the issue, and so how to fix this, how to make this 9, like the third column, non-divisible by 3. So I cannot remove three numbers from it because I want to play around with the numbers. I will take some 1 units from this side and I will put it somewhere else. So let's just say I will remove two numbers from here and I will give it to 2. That always works, right? So you can do a plus 2 over here, you can do a minus 2 over here. You cannot remove three numbers from 9 because it will again give you what do you say, a number which is divisible by 3. So you will remove two numbers from 9, you will give those two numbers to 2, so your eventual solution becomes something like this, 147. So first try for 1 to x. For 6 it would not work because even if you apply this logic over here to 1 to 6, it would be 1 to 6 plus 2 minus 2. You won't get distinct numbers because it would be 144. So with 9 nothing would work. So first try for this 1 to wala logic. If the third column is not divisible by 3, just print that 1 to x. If it is divisible, just print 1 4 x minus 2. So if we look at the code for this, this is simple. If n is less than 7, then you simply have to print a no. I found out the last number because I hope this is visible. One second. Yeah. So I wanted the last number. So if the last number, the third column that I was talking about, it's not divisible by 3, you can simply print 1 2 and temp last. If then if the number is not divisible by 3, you will print that. After that, if the number is divisible by 3 and it is not a case of 1 to 6, that means the number is greater than 12. Why 12? Because 1 to 9 say that case starts where the third column is actually divisible by 3. So you can implement this your way also, but this is what I have written. So you can just print then 1 4 and temp that x minus 2 wala logic. So this was it for the A question. Second question was a good question. I hope you all have read the problem. I won't go through the problem once again. So the problem says there's a okay, I'll just explain the problem once. There's a person at origin. He wants to go to his home, which is at point P, and there are two lanterns at point A and point B, and you have to get them. You have to give the minimal radius such that his path from origin to his home at P is completely illuminated, and that radius would be the illumination part basically. So at first I thought that this can be solved using binary search because such problems always
Like they have something for binary search, like such problems give you the hint that you have to use binary search. But again, this was a B problem, so there has to be some basic logic. I also missed a scenario because of which my answer got wrong at test 2. Yeah, binary search is also a tag. But anyways, we didn't solve this using binary search. You can try this using binary search. I think with that it would be much more easier, but so yeah, okay, how do I erase all this? So let's consider some basic scenarios. So we'll first make our grid. You are standing over here, this is your origin. Now let's just consider some basic cases. What all answers are what all answers are possible. So suppose your home is somewhere over this is your P, and you're like you are over here origin. It's not always necessary to include both A and B. Like these are some scenarios. Like in the end we'll find the minimal answer. First scenario, suppose A is somewhere over in the middle over here. It is A is over here, like the two lanterns. The first lantern is over here and the second lantern is somewhere over here, B. It's not always necessary to include both the lanterns. You can always make use of one lantern and reach home. Like that is why the answer is always possible. You can always take the radius as very large and you can always reach home. So that is the first scenario that I'm saying. Like and then how you will decide. So suppose I said that okay, I want to reach home only using lantern A. I don't want to use any other lantern. Then the second question is, now you have to decide a radius. So if you have taken A as your lantern and you also want to cover point origin and point P in that radius, you will simply take max of these two things. You will simply find the coordinate distance between these two coordinates and this coordinate. So let's just say distance is d1 over here and distance is d2. Your radius is simply max of d1 comma d2. Simple logic, because you have to cover both the points. Same thing happens with B also. So what I did is, first I considered, okay, I will take only A, I will take only B, like and calculate the answer for both of them. And suppose then you have decided that I only want to take lantern B. If you only want to take lantern B, let's just say this is dB1 and this is dB2. Then what happens? Again, the answer, if you only take lantern B as your illumination lantern, that you're only concerned with lantern B, then again max of dB1 comma max of dB2, and then you can actually take the min of these two. This is the case where you are saying that I'll only go home using one lantern, but that would never be optimal, right? Like this is just a scenario. This also I've coded, this is just a scenario. Let's move to the second scenario, which is the which I thought was the is the most optimal thing. So this is your radius. So suppose again you are over here, your P is somewhere over here, okay, something like that. So if there are two lanterns, let's just say A and let's just say B. So if those two lanterns, they want to coordinate and they want to make you reach home, the best solution is what if those two lanterns just intersect, like not intersect, whatever this is called, like they are not overlapping, they are just touching each other, like there is just a small line and that's all. You are just concerned with that, like these two lanterns just simply should touch each other, like they should not overlap, because that's the optimal solution. If you think closely, that's like the optimal solution. You don't want them to overlap. So how do you solve this? How do you design such a illumination area where the lanterns are just touching each other? So again, simple thing, you find the distance between these 2 points, you divide that by 2, that's your radius, and you will get two circles who are just simply touching each other. That is the whole idea for this scenario, that I want those two circles to just simply touch each other. Now this won't always be right. Then you again have to write a check. The point of origin and the P point, O point should be either in A or in B. It should be in one of them. P point ka bhi same cheese, because we know that if O is somewhere in this A or somewhere in this B, or if P is somewhere over in this A circle and somewhere over in this B circle, then I can always go from O to P with lantern over me, because I'm sure that there is a path, because I made sure that these two are connected. So I can always reach from O to P if I make sure that both of those 2 points are in any one of these two circles. That will prove your point.
Now again, this scenario is a scenario, but again there is a corner case left. Sometimes there would also be overlapping possible. So let's just say you are somewhere over here O, and your house is somewhere over here P. So let's just say B was somewhere over here, like there is point B over here, and there is point A somewhere over here. So again, so let's just say you plan to do that. Matlab, just imagine that the coordination is something like the coordinates are something like, even if you take half, you won't actually cover those 2 points. ठीक है, you won't actually cover those 2 points. Let's just imagine that the coordinates are in such a way that you're not, so let's just say you're covering only the origin. That is also fine. So origin is coming inside that A circle, but origin P is not coming inside the B circle. So first one, so the second test case, the second scenario that I explained, that would fail. The first scenario would work where you're considering only A as your lantern and B as your lantern, but again that would not give you the optimal answer. It would give you a very huge answer. So over here, what we have to do is, so first of all, make this circle, because now we know that overlap has to happen. Even if it's happening, it will start with this thing, right? It, like, this is the point where overlapping would begin. So itna part tak it is correct. Like, you have touched the circles, it is the point O is covering A and blah blah blah, whatever. Like, this is the scenario. How to go ahead? Now you will come to point O, the origin where he is right now, and you will check, are you in any of the points A or B? If he says yes, I am in A, or yeah, you can just check ki, the radius of A and the radius of B, like, is it less than the radius of, like, the distance from A to O. I will show you the code. You can just simply check the radius of RA, is it greater than the distance between A and O. If that is the scene, that means O is inside A. Similarly, you can check if any point is inside B. Once that is done, what you have to do is, so suppose P tells you, no, I'm not inside A and I'm also not inside B. Then you have to check, like, which point, because you want to ensure that you're not increasing the circles too much. You will ask yourself which point is closer to B. How will you check that? You will check this distance and you will check this distance. You will see that point B is very closer to B. So you will increase this radius RB to R RBP, the distance between B and P. And then your point P is inside that B wala lantern. And this is the third scenario. Here there would be some overlapping, but this is the most optimal case. So what we did over here, you made sure that the circles are just touching each other. Then you check for the point O and the point P. You will ask those 2 points, are you in any of these two circles? Like, even if you don't apply the second scenario and directly apply the third scenario, then also it would work basically. So just keep in mind, there is scenario 1 where only lantern A and only lantern B is concerned. Then there is this scenario where there is lantern A, lantern B. You wrote a you decided the radius such that those two circles are just touching each other, they are not overlapping. Then you checked for each and every point, is that point inside A or B? If it is inside any of those two lanterns, then you are okay with the point. Here, like, for example, point P is not inside A or inside B. Then you will check from those two lanterns which lantern is closer to P. You will slowly increase that lantern's illumination point and your answer is done. Similarly, you can do for both the points. You just have to check, are you already inside? And if it's not already inside, check which lantern is closer and increase that lantern's radius. Phew. Okay. Now coming, so don't look at the second scenario. I just realized it's not needed. So what is this answer? This answer is basically only at, like, only lantern A and only lantern B. So distance actually calculates this distance function. What if I have only consider lantern A? What if I only consider lantern B? So if I consider only lantern A and only lantern B, then this is the solution. You can say that I just used a normal distance, like 2 point distance wala formula. Then you will, so what this R is, this R is basically point A, point B, then बीच का radius. ठीक है, so distance between AX and, like, AX AY and BX BY divided by 2. This is the radius of that circle such that those two circles are just touching each other. Skip this part, this is not needed. Even if you like, this is just checking, are those 2 points already inside that circles and all. So even if you don't write this, this should work. Then you will check,
is my 0 comma 0, that point 2, is it inside A or is it inside B? And if it's not inside, I've written a not. If it's not, check who is closer. Distance to actually simply calculates the distance. Then check who is closer to distance, ax or ay. The one who is closer, that is my like that is my new radius now. So I will again increase my radius. Again I will check the same thing for point P. Are you inside that A circle or B circle? If the point P is not inside either of them, I will again increase my radius. In the end, just simply print the answer. So this was for problem B. I'm not sure if I explained this correct, but you got the gist, right? Like what you have to do. There's just first scenario where you consider only lantern A, only lantern B. Check like you are only focused on lantern A, that my lantern A ka radius is the only answer, and similarly for B, then get the minimum. Then you decide on a radius such that A and B are just touching each other. If they both are just touching each other, it's okay. Again check, are both my points inside any of those circles? If they are not, you slowly have to increase the radius of that lantern who is closer to that point. Summarized, that is what you have to do in question B. Problem C, like this was also a simple problem. Yeah, so I hope you have read the problem. Like initially you are given a string. At every point you have to decrease, like you have to remove a character such that the new string formed is lexicographical smaller. Suppose DACB, you remove D, it becomes it becomes ACB, then it becomes AB, then it becomes A, and in the end you concatenate all those strings, and then they ask you the position of the character. Like इस position में कौन सा character था at that point. So how do you solve this? So don't, so this part they have complicated it a lot. You can simplify this problem a lot by just looking at it this way. Don't focus on this concatenation वगैरह part. So what they've given you the position. So suppose if I say that I want position number 6, you can easily calculate at which point my position 6 is going to come. So what I mean by that is you have to play with that position wala variable. So suppose my string is suppose my string is EFAC, then it becomes just so assume I'm not doing the lexicographic thing wala, then it, so suppose I remove A, it becomes EFAC, then it becomes FC, then it becomes C. So if you see यहाँ पे there were a total of 4 characters, यहाँ पे there were 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. So यहाँ पे the actual string, assume करो concatenation is happening. So यहाँ पे concatenation में the string length is 4, यहाँ पे it would be 7, यहाँ पे it would be 9, यहाँ पे it would be 10. And they've also given you that the position that will be giving you would be less than 10. That is in the constraints. Now how to solve this? Now suppose someone comes to you and tells you that I want position 8. I want position 8. How will you solve that? You are aware that इस point तक 7 था, my string का concatenated length. Now we are not doing the actual concatenation, you can't do that. So you are aware that this point तक the length was 7. So you are only concerned with this string actually. Why you are only concerned with this string? Because you are aware यहाँ तक the length was 7, यहाँ तक the length was 8, यहाँ तक the length was 4, यहाँ तक it was 7, यहाँ पे it become 9. So 8 is also over here, right? Similarly, so this also has the position 8, this also has the position 5 and 6, this also has position 1, 2, 3. Now once you find out कि कौन से step में the position is asked, because यहाँ पे there were a total of 2 removals. There were a total of 2 removals and you got FC, and you're also, now how will you check that? I will tell you. Now you got that after 2 steps the string that I got has the position 8, has the 8th position. Once you have that, so what all you have now? You know that how many removals you have to do, and you also know after 2 removals, suppose I get the string FC. At FC the actual length was 9, but मेरे से 8th पूछा था, so I have to just go 1 back and give him F. So displacement basically, because I know यहाँ तक the length was 9, यहाँ तक जो string आने वाला था वो मैंने निकाल दिया, that I'll tell you how. वहाँ तक जो string आने वाला था वो मैंने निकाल दिया FC, और मुझे पता है मेरे से 8th कैरेक्टर मांगा है,
तो मुझे, और मेरे पास 9th कैरेक्टर्स टोटल तक, लाइक यहाँ तक जो कॉन्कैटिनेशन उसमें 9 है, तो मुझे एक पीछे जाना है और मुझे उसको आंसर देना है. सो अभी क्वेश्चन क्या बनता है? The toughest part over here is now, like you must have solved this problem before also, कि given the removals, given there are two removals, so actual link का string क्या था 4, तो after two removals string का length क्या होता है 2. अभी तुम्हें वो जो string है ना, ये इसमें से ऐसा एक सब सीक्वेंस निकालना है जिसका लेंथ 2 है और वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है. दिस इज़ द क्वेश्चन. ये बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन अभी, बिकॉज अभी तुम्हारे पास टोटल लेंथ था, आई गेव यू कि इतने नंबर निकाल दे. सो डोंट फोकस ऑन निकाल दे, फोकस ऑन कितने नंबर रखने हैं. सो दैट इज़ एक्चुअल लेंथ माइनस रिमूवल्स. सो एक्चुअल लेंथ क्या था 4, मैंने उसमें से 2 हटाए तो बचे कितने 2. तो मुझे रखने 2 नंबर है, आई हैव टू कीप 2 नंबर्स. तो 2 नंबर्स अभी ऑब्वियसली सीक्वेंस में होने चाहिए, सब सीक्वेंस निकालने हमें, सब स्ट्रिंग नहीं. वी हैव टू फाइंड द सब सीक्वेंस. So now the question is, given a string EFAC, find a subsequence of length, length तुम्हें निकालना आ गया length k, such that such that it is lexicographically smaller. Now this is the question now. वंस अगेन आई समराइज. तो मैं एक एक नंबर निकल रहा था, तो जब कॉन्कैटिनेशन को माइंड में रखो तो 4 बना स्ट्रिंग, फिर 7 बना, फिर 9 बन गया. तुम्हें तो 8 चाहिए था, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ तक रुक जाना है, तुम्हें आगे से कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें पीछे से भी कुछ मतलब नहीं है. तुम्हें पता तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें पता चल गया कि 9th कैरेक्टर में है, तो तुम्हें बस ये वाला प्रोसेस हमने क्यों किया, हमें बस ये देखना था कि मैंने कितने नंबर्स निकाले. देयर वर अ टोटल ऑफ 2 रिमूवल्स. तो अभी तुम्हें अगर मैं ये वाला स्ट्रिंग दे दूँ, तुम अगर ये स्ट्रिंग फिगर आउट कर लो, तो तुम्हारा आंसर मिल गया, राइट. सपोज़ किसी ने तुमसे 8th पोजीशन का नंबर मांगा था, तुमने क्या बोला, ठीक है ई एफ ए सी में 4 कैरेक्टर थे, प्लस एफ ए सी में 3 और आ गए, 7 हो गया, प्लस एफ सी इसमें तो 9 हो गया, तो एक पीछे आ जाता हूँ 8. दैट इज़ योर कैरेक्टर. बट ये कैसे निकाले? ये हम कॉन्कैटिनेशन तो करके वो वाला लूप नहीं लगा सकते ना. अब ये कैसे निकाले कि ई एफ ए सी का ऐसा कोई सब सीक्वेंस जिसका लेंथ एक्चुअल लेंथ -2 है, और उस पर मैं कितना पीछे आना है वो तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ. सो अभी नाउ, सो लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन कि ये सब सीक्वेंस कैसे निकाले के लेंथ का जो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है. आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ. अभी वो कुछ खास है नहीं, दैट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक. सो सपोज आई हैव समथिंग लाइक, मुझे सपोज़ एक स्ट्रिंग गिवन है एफ सी ए डी बी ए, ठीक है, डी बी एंड ए एंड सी भी ले लो. तो पहले मैंने ना एक ऐसा मैपिंग बनाया, ए बी सी डी एफ, मेरे यही कैरेक्टर्स है. ए के पोजीशन, इसको मैं इंडेक्स कर देता हूँ 3 4 5 6. ए के पोजीशंस क्या है 2,5. बी के पोजीशंस क्या है 4. सी के क्या पोजीशंस है 1 एंड 6. डी के पोजीशंस है ओनली 3. एफ का क्या पोजीशन है 0. तो अभी तुम्हें पता है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें इसमें से ना 3 लेंथ का स्ट्रिंग निकालना है विच इज़ लेक्सियोग्राफिकल स्मॉलर. सो सब सीक्वेंस विच इज़ लेक्सियोग्राफिकल स्मॉलर, उसका मतलब क्या हुआ कि देयर वर 1 2 3 4 रिमूवल्स, देयर वर अ टोटल ऑफ 4 रिमूवल्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ए पे आ गया मैं, तो ठीक है एफ से स्टार्ट करना है, तो तुम एफ पे हो. अगर तुम्हें एफ को एक कैरेक्टर एज ए कंसिडर करना है, ठीक है, अभी हमारा ये स्ट्रिंग है, जो नया स्ट्रिंग बनने वाला है ना अपना, ये स्ट्रिंग है. तो मैं एफ़ को एक नया कैरेक्टर कंसिडर अगर करना है, तो तुम उससे पूछोगे कि एफ़ से छोटे नंबर, दैट इज़ आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए टिल लेस देन एफ़, कोई छोटे नंबर अवेलेबल है क्या मेरे बाद. तो मैं ऐसे लूप लगाऊंगा, इस मैप पे लगाऊंगा, बेसिकली ए टू जेड, मतलब ए टू लेस देन एफ़ लगाऊंगा एंड मैप में चेक करूंगा. तो मैंने देखा मेरे पास तो ए ही पड़ा हुआ है, तो मैंने बोला ठीक है ए पड़ा है, ए का फर्स्ट अकरेंस क्या है वो मैंने देखा, वो तो 2 है. तो मैंने बोला व्हाट इफ़ आई इग्नोर एफ, क्योंकि लेक्सियोग्राफिकल स्मॉलर में ऐसे ऐसे सोचना कि फर्स्ट कैरेक्टर नंबर्स, लाइक जितना पहले तुम छोटे नंबर डालोगे ना उतना बेटर है. तुम्हें पहले छोटा नंबर डालना है. तो मैं पूछूंगा क्या मैं एफ़ को ले लूँ. उसने बोला, फिर मैंने बोला ए का फर्स्ट अकरेंस क्या है ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में, उसने बोला 2. सो ओवर हियर वी हैव 2
अगर मैं इस 2 से स्टार्ट करूँगा, क्या आगे मेरे पास कितने नंबर्स बचे? स्ट्रिंग तो भरा ही नहीं है, मुझे 3 नंबर अभी भी भरने हैं। क्या मेरे पास आगे 3 नंबर्स है? अगर मैं ए को फर्स्ट नंबर लेता हूँ तो क्या मेरे पास आगे 3 नंबर है जो मतलब मैं आई वोंट बी फॉलिंग लेस ऑफ द नंबर्स, राइट? मुझे बस वो लाइक आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मेरे पास आगे नंबर्स कम ना पड़ जाए। आई डोंट वांट टू फॉल शॉर्ट इन नंबर्स। तो यहाँ पे ए आया, तो जब यहाँ पे ए आया मेरे को बस ये देखना है कि क्या मैं अभी भी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 3 कैरेक्टर बना पाऊंगा क्या? उसने बोला हाँ तू बना लेगा, एफ़ को इग्नोर कर दे। एफ़ गॉट इग्नोर्ड। सी पे आए, एक्चुअली ए पे ही चले जाना चाहिए था, बट ठीक है सी पे आए। सी के साथ भी सेम खेला, ए से लेस देन सी गए, मैंने बोला कोई नंबर है क्या? उसने बोला हाँ ए है, इग्नोर कर दे। ए इग्नोर हो गया। अभी वापस एक ए आ गया, तो इसमें लेस देन ए क्या ही लगा है, तो हमने स्ट्रिंग में अपना ए ऐड कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ एक हो गया। अभी मैं डी पे आया, ठीक है, ये गॉट लाइक दिस वन गॉट एडेड, ये गॉट इग्नोर्ड। अभी मैं डी पे आया, मैंने पूछा डी को लेना है क्या? उन्होंने बोला तेरे को अभी और कितने कैरेक्टर चाहिए? मैंने बोला मेरा एक कैरेक्टर हो गया, मुझे अभी और 2 कैरेक्टर चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, लेट्स अगेन इटरेट। तो मैंने बोला तो ये 2 हट गया अभी, हाँ, दिस 2 गॉट रिमूव्ड, ऑल्सो दिस एफ एंड सी गॉट रिमूव्ड। एफ चल गया, ये भी चला गया, वो मैंने सेट से रिमूव कर दिया। दिस इज़ अ सेट बेसिकली, ये एक सेट है। अभी मैं डी पे आया, मैंने बोला डी को लेना है क्या? उसने बोला वापस इटरेट चालू कर, देख तेरे पास तो उसने बोला हाँ मेरे पास ए पड़ा हुआ है। तो उसने बोला ठीक है, ए का फर्स्ट अकरेंस अभी क्या बचा है? उसने बोला ए का फर्स्ट अकरेंस 5 बचा है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तू ये डी स्किप करता है, क्या तेरे पास 5 से, अगर तू 5 से स्टार्ट करे, 2 एलिमेंट है तेरे पास? मैंने बोला हाँ मेरे पास 5 और 6 है, 2 एलिमेंट बचेंगे अगर मैं। तो उसने बोला ठीक है, इग्नोर डी। सिमिलरली बी गॉट इग्नोर्ड और वो ए ऐड हो गया। क्योंकि फिर वापस लास्ट में हम सी पे आए, तो सी पे मैंने पूछा कि और कोई बचा है क्या? कोई बचा ही नहीं था। और सी को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो मेरे पास नंबर नहीं बचेंगे, तो सी में ये वाला जो चेक हम लगाते हैं ना वो फेल हो जाता है। तो तुम्हारा वो बन गया ए ए सी। अभी आफ्टर यू हैव फाउंड द नंबर, एक बार तुम्हें नंबर मिल गया ए ए सी, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था? ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रिंग था एफ सी ए डी बी ए सी। सपोज़ वो कुछ कुछ छोटा होता गया, सपोज़ इट देन बिकेम एफ सी ए बी ए सी, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, लेक्सियोग्राफिकली कंप्यूटेशन नहीं कर रहा हूँ। देन इट बिकम सी ए बी ए सी, देन इट बिकेम ए बी ए सी, देन इट बिकेम ए ए सी। ठीक है, यहाँ पे जब ए ए सी आ गया तुम्हारे पास, तो तुमने ना ये ए ए सी निकाल दिया। दिस इज़ वही, ये जो ए ए सी आया है ना तुम्हारा, दिस इज़ उस ऑपरेशन के बाद जो आना था ए ए सी। बट अभी ये कितने कैरेक्टर्स थे? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 थे। 6 5 4 3, तो 7 13 18 22 25। लेकिन मैंने ना तुमसे मांगा था 23rd कैरेक्टर, तो ये तो तुमने निकाल दिया। एंड इफ़ यू सी दिस सी इज़ एक्चुअली द 25th कैरेक्टर, लाइक उस कॉन्कैटनेटेड स्ट्रिंग में मैंने तुमसे मांगा था 23rd कैरेक्टर। तो तुम्हें पता है 23 है, मुझे और 2 पीछे जाना है, ये मैं 2 पीछे चला गया, दिस इज़ माई कैरेक्टर। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जस्ट तुमने ये निकाल दिया कौन से पोजीशन में कितने रिमूवल हुए, -1 -2 -3। और तुमने वहाँ भी क्या डिसाइड किया था कि तुम्हें 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग बनाना है। तो तुमने यहाँ से एक निकाला, यहाँ से एक निकाला, यहाँ से एक निकाला, सॉरी एक और निकाला, -4, टोटल 4 रिमूवल्स थे। और तुमने स्ट्रिंग भी लास्ट में देखो 3 साइज़ का ही बनाया। तो तुम्हें बस इतना ही पता करना था कि मुझे कितने रिमूव करने हैं। देन तुम्हें जो बचे हैं 3 कैरेक्टर, उसका एक सबसीक्वेंस ढूंढना है। सबसीक्वेंस मिल गया, तुम्हें कौन सा कैरेक्टर पूछा था? 23, देन 2 पीछे चले जाओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बट आई होप यू गॉट इट। सो पूरा लॉजिक कैसे चल रहा है यहाँ पे? दिस इज़ द फाइंड लेक्स, ये जो मैंने पूरा लेफ्ट साइड में लॉजिक बताया ना, दिस इज़ ये वाला लॉजिक। ये जो पूरा लॉजिक चल रहा था यहाँ पे, वो वाला लॉजिक बाद में देखते हैं। ये वाला लॉजिक, सो दिस इज़ बेसिकली एम एन स्टेप्स कितने लगे हैं, मतलब मेरे कंप्यूटेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ रहा था, मैंने कम कर दिया। सो वाइल करेंट लेंथ इज़ लेस देन पॉज, जो यहाँ पे हो रहा है 7 + 6 13 + 5 18 + 25 चला गया, मैंने उस लूप से ब्रेक कर दिया। देन मैं करंट लाइन में ऐड करते जा रहा हूँ और मैं स्टेप्स काउंट करते जा रहा हूँ। तो स्टेप्स एक एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट जो कॉन्कैटेनेशन था ना उसको भी एज स्टेप काउंट कर रहा था। अभी तुम्हें स्टेप्स
the only thing you need is s and the steps to find the new string, and this is the displacement जो मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि तुम्हारा करंट लेंथ 25 आया है बट तुम्हें 23rd पोजीशन मांगा है, तो तुम्हें कितना पीछे आना है बेसिकली। ठीक है, ये वाला पार्ट वो था। अभी फाइन लेक्सिकोग्राफिक जाते हैं कि ये स्ट्रिंग एस था और ये स्टेप्स है, तो अभी तुम्हें पता है रिमेनिंग लेंथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी एस डॉट लेंथ माइनस द स्टेप्स। सो वही जो अभी मैंने बताया, ये फ्रीक्वेंसी मैप ये है, ये जो तुम यहाँ देख रहे हो ए बी सी डी एफ का जो फ्रीक्वेंसी मैप है, तो फ्रीक्वेंसी मैप क्रिएट होगा न्यू स्ट्रिंग, जो न्यू स्ट्रिंग हम देने वाले हैं। एवरीथिंग मैंने वेरिएबल्स उसी तरह से लिए सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो मैं स्टार्टिंग से गया, मेरा करंट कैरेक्टर क्या है, शुड आई टेक दिस, डिफ़ॉल्ट में वैल्यू इज़ ट्रू। फ्रीक्वेंसी से मुझे उस ये जो मैप बना आई हैव टू रिमूव दैट नंबर। देन मुझे कैरेक्टर ए से स्टार्ट करना है, लेस देन इक्वल टू करंट। मैं चेक करूँगा क्या अकरेंसेस पॉसिबल है उस कैरेक्टर के लिए, तो मैं उसका फर्स्ट अकरेंस लेकर आऊँगा। फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है फर्स्ट अकरेंस तो आ गया, अभी लेट्स चेक कि मुझे और कितने नंबर्स चाहिए। तो दैट इज़ रिमेनिंग विच वॉज दिस, जिसका हम स्ट्रिंग बनाने वाले, ये जो आर ई एम है इट्स एक्चुअली दिस न्यू स्ट्रिंग का लेंथ। तो आर ई एम माइनस न्यू स्ट्रिंग का लेंथ, लाइक कितने बन गए ऑलरेडी, सो रिक्वायर्ड में मिल जाएगा कि कितने बचे हैं, पॉसिबल कितने हैं, एस डॉट लेंथ जो पूरा स्ट्रिंग था एक्चुअल माइनस द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस, वो तुम्हें देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करता है ना, तेरे पास इतने पॉसिबल लेंथ अभी भी बन सकता है। अगर मेरा पॉसिबल रिक्वायर्ड से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं एक छोटा नंबर आगे जाके ले सकता हूँ ना। एंड लेक्सोग्राफिक में वही मैटर करता है, छोटा नंबर जितना आगे हो सके उतना आगे आना चाहिए। सो मैं बोलूँगा टेक फॉल्स, इसको मैं नहीं ले रहा, यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। बट अगर मैं उसको ले रहा होता तो मैं उसे न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा मेरे करंट में, एंड देन आई विल मूव अहेड। वन सेकेंड। हाँ ठीक है, तो मैं उसको मैं लाइक आई वाज थिंकिंग यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी मैप से इरेज क्यों नहीं किया जिस नंबर को मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि उस नंबर को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं उस नंबर पे जब आऊँगा ना मैं उसको तब लूँगा। सो यू टेक दैट नंबर एंड यू सिंपली एड इट टू योर करंट स्ट्रिंग, लाइक उस कैरेक्टर को। अगर न्यू स्ट्रिंग ये हमेशा ट्रू होगा, अगर न्यू स्ट्रिंग का लेंथ आर ई एम हो जाता है तो यू सिंपली रिमूव न्यू स्ट्रिंग, नहीं तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ तक कभी कोड आएगा नहीं एम्प्टी स्ट्रिंग। देन एक बार तुम्हें स्ट्रिंग मिल गया, यू सिंपली देन उसको पीछे से डिस्प्लेस कर दो। तो मैं लाइक तुमने 25th कैरेक्टर से निकाल दिया, तो मैं पूछा 23 था, गो 2 कैरेक्टर्स बैक एंड यू विल गेट योर स्ट्रिंग। So this was it for the editorial of Code Forces 156. Let me know कुछ doubt है तो I'll clear that in the comment section. Thank you.